Good morning, students. Uh, Welcome in biology class. Students, we already covered two chapters, and here today we are going to revise your chapter cell structure and function again. So, today's learning objectives are: at the end of the lecture, the students are able to define the cell and its basic components. Students are able to classify the cell on the basis of their number, shape, and size, and students are able to enlist the functions of basic components of cell. So let's start with the video. Thank you. Reading storybooks. Every story is framed with sentences, and sentences are framed using words. And what are words made up of? They are made up of letters. If you notice, then everything around us is made up of one or the other smaller entity. These small entities are called basic units. Did you know that even our body is made up of basic units? Yes, it is. Although it appears to be one single body, it's actually made up of millions of basic units coming together. What are these units called? They are known as cells. Cells come in different numbers to form a body, rather, any living organism's body. Can you guess the minimum number of cells required to form an organism's body? Do you know the answer? There are organisms which are made up of only a single cell. They are called the unicellular organisms. Bacteria are one of the best examples of this category. What are organisms like us called then? We belong to the category of multicellular organisms. Those having several cells to make up the body are called multicellular organisms. Now the next important question is, if there are so many cells in our body, then are all of them exactly the same? Of course not. There are many number of cells in our body, and so are their types. Look at these cells, for example. These look so different. But astonishingly, all three are a part of our body. This one is an ovum, this is a neuron, and the last one is a red blood cell. Their structures, shapes, sizes are totally different from each other, and so are their functions. This is how various types of cells come together in different numbers to form our body. We have this knowledge today, but ever wondered how all this was actually discovered? Let us go back in time and have a look at the history of cellular studies. Basic units of life. We know this. And by now we even know how the discovery of cells, as seen in the tree cork, was a breakthrough in biological studies. Now it's time to have a look at how the cells actually look under a microscope. For this, we select onion peel as our specimen. But before we begin with the procedure, let's first collect the necessary requirements. We will need a microscope, a slide, a cover slip, iodine solution, water, and forceps. Anything else we're left with? Well, the most important of all is the specimen, that is an onion peel. Now that we're all set with the equipments needed, let's begin with the amazing experiment of observing the onion cells under the microscope. Firstly, we take the onion peel and with the help of the forceps, pull away the thin lining from the inner surface. Before placing this on the slide, we first add a drop of water on, then place the onion peel on it. We are not supposed to touch the peel and even the slide with our fingers. Next, we add 2 drops of dilute iodine solution. Hold on, do you know why is iodine solution added to this specimen? We do this so that we can clearly see all the parts of the cell. Else it's difficult to study them as they are transparent. It would even be difficult to differentiate between the various parts. Now we place a cover slip in this manner and make sure that no air bubbles are formed on the slide. With this, our slide is ready. This entire process of setting up the microscope along with the slide is termed mounting. It's also important to see that there is enough light falling on the mirror of the microscope. Shall we observe it now? Here we go. Wow, doesn't it look amazing? Now before studying these, tell me one thing. Do plants and animal cells look the same? Do they have the same organelles?
Or are the two types different in some ways? Well, plant and animal cells are slightly different. When cells from a human cheek are scraped with a sterile cotton bud and mounted, similar but not exactly same cells are seen under the microscope. Roughly, we have these thick, distinct borders that differentiate each cell from the other one. Then we have these thin, tiny dark spots scattered all over. Also, we can spot this prominent circular structure here, which is very darkly stained. Any ideas what these things are? Well, these are the cell constituents. Let's get introduced to each in the next video. Good morning, students. As you already know, we already covered two chapters. The first is called the cell, its structure and function, and the second one is microorganism, friends or foes. So students, before proceeding for the further chapters, we are going to revise your two chapters again, and your first chapter is the cell, its structure and function. So here is the quick recap, or you can say revision of the chapter. So as the name of the chapter is called the cell, its structure and function, so the first question arises, what is cell? So the simple answer is cell is called the basic structural and functional unit of all living organisms. ठीक है, आपकी बुक में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा है द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. लेट अस सपोज जैसे कोई बिल्डिंग है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो ब्रिक्स हैं. सिमिलरली द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. So that's why it is called the basic structural and functional unit. Now the question arises, why the cell is called the structural and functional unit? Very simple, because जितने भी हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस हैं, लाइक यू कैन से न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, these all processes generally performed by the cells, and these functions are essential for the survival of the organisms. So that's why we can say that the cell is called the basic structural and functional unit of all living organisms. So अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें, तो जो फर्स्ट सेल था that was observed by, or you can say discovered by the scientist, and the name of the scientist is Robert Hooke in the 1665. और उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनी ट्री. ओके, तो उन्होंने जो हार्ड कॉर्क होती है उसका एक टुकड़ा लिया और उसको एक सेल्फ डिज़ाइंड, खुद का एक माइक्रोस्कोप उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स. और उसको अंडर माइक्रोस्कोप जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो बट ही ऑब्जर्व द हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड उन हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया. और ये डेड सेल्स थे, और नेचुरली बात है, कॉर्क इज द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, सो दीज ऑल सेल्स आर प्लांट सेल्स. आगे जाकर के देखो, हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देर आर 3 कैटेगरीज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सेल्स आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड. द फर्स्ट इज कॉल्ड द सेल नंबर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर the organisms are classified into 2 categories. The first is called unicellular organisms, and the second one is called multicellular organism. What are unicellular? The organisms which only having a single cell, and in these organisms a single cell is going to perform all the functions. You can give the example of bacteria, you can give the example of yeast, you can give the example of amoeba, you can give the example of euglena, you can give the example of paramecium. तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैविंग ए प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर. और यहाँ पे क्या होता है, द डिफरेंट सेल्स आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. और इसमें भी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, अर्थवर्म, डॉग, यू कैन राइट सो मैनी एग्जाम्पल्स. सो दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आगे देखो क्या है, शेप ऑफ द सेल. द सेकेंड इज वी कैन क्लासीफाई द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करते हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ द सेल, कि कौन सा सेल हमारी बॉडी के किस पार्ट में है. एंड द सेकेंड इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द सेल. सो यहाँ पे देखो, अगर हम बोलें कि डू यू थिंक द शेप एंड लोकेशन ऑफ द सेल इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, द वेरी सिंपल आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नर्व सेल की बात करूँ, तो नर्व सेल हैव लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, और उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन
या इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नर्व इम्पल्स का या मैसेजेस का नाम दे सकते हैं, ताकि वो नर्व इम्पल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो आपके क्या कर सकें, आपके ट्रांसमिट कर सकें. एंड दैट इज़ द रीज़न कि द नर्व सेल हैव द लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे सर्टेन फैक्ट्स हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए. सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा. दैट इज आल्सो कॉल्ड PPLO. वट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. और बच्चे इसका साइज़ भी आपको पता होना चाहिए. इसका जो साइज़ होता है वो 0.1 माइक्रॉन. और अगर मैं 1 माइक्रॉन की बात करूँ तो 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. तो आपको पता होना कितना छोटा सा सेल है. लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच आ जाता है. इसका जो 170 मिलीमीटर इन डायमीटर है, इसका जो डायमीटर समझते हैं आप. लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है, न्यूरॉन भी इसे, बट इज द नेम ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन. अप टू 1 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है. ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटे सेल की बात करें तो RBCs आ जाते हैं हमारे. रेड ब्लड सेल 9 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है. और लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी हम बात करें तो ह्यूमन फीमेल ओवम होते हैं. 0.1 mm इसकी जो है वो साइज़ है. तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि एक सिंगल सेल को कभी भी हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच एग की बात करें, हैंड्स एग की बात करें, तो ये सारे के सारे एक सिंगल सेल कंसीडर होते हैं आपके. ठीक है, ये हैंड जो हैं, जैसे हैंड्स एग इज ए विजिबल single cell which is visible to the naked eye, so we can say that the some cells can be seen with the help of the naked eye or unaided eye also. आगे है आपका अब देखो यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्म आ जाता है आपका. बट इज प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ द लिविंग मैटर ऑफ ए सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है. तो एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म की. लिविंग नेचर सेल को कौन देता है? प्रोटोप्लाज्म. और लिविंग नेचर जो है, लिविंग मैटर है, तो उसके 2 पार्ट आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो हम बारी बारी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल जो हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. द फर्स्ट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एनी सेल. ठीक है, पता होना चाहिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन? नंबर 1, एक तो ये प्रोटोप्लाज्म को बाउंड्री मीन एक डेफिनेट बाउंड्री देने का काम करते हैं. और दूसरा, जितने भी मटेरियल हैं, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस. हमेशा जो यूजफुल मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर करेंगे और जो हार्मफुल मटेरियल है वो सेल के बाहर जाएंगे. तो ये सारा कंट्रोल करने का काम आपकी कौन करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. द सेकंड कंपोनेंट इज सेल वॉल. कई ऐसे सेल होते हैं, मैं 3 सेल मैंने आपको बताए हैं पहले भी, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस. इनके अंदर एक एडिशनल कवरिंग होती है. सेल मेम्ब्रेन तो सभी में कॉमन है, पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग इनमें देखी जाती है. दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. और जो सेल वॉल है उसका मेनली काम क्या है? रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन एक टफनेस देना, टफ मीन हार्डनेस देना सेल को, प्रोटेक्शन देना सेल को. और बट एवर द चेंजेस, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजेस आए, बट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, ओनली बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो साइन 3S मैंने आपको बताया था. इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल. अब क्वेश्चन आ जाए कि वाई द प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल? वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज द प्लांट सेल हैविंग द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉल. एनिमल सेल के अंदर आपकी सेल बॉल आपकी प्रेजेंस नहीं होती. साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. और याद रखिएगा, इट एक्ट एज ए ग्राउंड सब्सटेंस. जितने भी सेल के बेसिक फंक्शंस होते हैं आपके, जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं जो आपकी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म करती हैं. दैट्स वाई it is acting as a ground substance to perform the different cell activities. न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है. न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया जाता है. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्रोमैटिन बोला जाता है. अब देखो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, जब सेल ने डिवाइड करना है, मीन एक से 2 सेल, 2 से 4 सेल, जब सेल डिवाइड करते हैं तो ये क्रोमैटिन है, ये कंडेंस हो जाते हैं. दे आर फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स.
और क्रोमोसोम्स और जीन्स जो होते हैं आपके, इनका मेनली काम क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो फीचर्स आपके मूव करते हैं, that is only because of the chromosomes or genes. And what is gene? Very simple answer, it is the unit of inheritance. Inheritance mean characters कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो it is the unit of inheritance which get transferred from one generation to the next. So in second revision schedule we are going to discuss about the cell organelles and basic differences in the plant and animal cells. Till then, stay safe, stay at home, and happy learning. God bless you all.